प्रोक्रेस्टिनेशन, ये नहीं कि मतलब फंसे रहे जिंदगी भर, जस्ट रुके हुए हो एक जगह कि यार वेट कर रहा हूँ मैं, कब आएगा मेरा पर्पस, पता नहीं है। यू आर अ ब्लडी एस्केपिस्ट हु इज जस्ट नॉट वांटिंग टू टेक एक्शन इन लाइफ। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाबा जिस तरफ इंटरेस्ट है जाओ, एक दो स्टेप्स लो। फटती है कैमरा के सामने बोलने से, बोलो बाबा, ट्राई करो। अगर लेट्स से फटती है किसी और चीज करने में या डर लगता है बड़ा, प्लीज रिमेंबर दैट ये डर आपके माइंड से आ रहा है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। देर आर 1000 करोड़ों लोग हैं, लाइक वो जो चीज कर रहे हैं वो भी इंसान ही है आपकी तरह, लाइक योगा इस नमस्कारम। So, Debu Dastak is a platform where we talk on mental health and a lot of other sensitive issues, right? So basically, the entire aim of this channel is to build a community around sensitive issues and make people feel comfortable about themselves. So basically, like, if you're new here, consider subscribing. Our mission is to empower you with ideas to live smartly and joyfully. The world is full of suffering, but let us increase our competence to deal with things joyfully. And just a tip, so all these are basically conversations, so I might suggest that you should watch these conversations at 1.5x. You can increase the playback speed through the button in the settings. Cheers and enjoy watching. Yo guys, so आज हम बात करेंगे about a concept I read. ये बड़ा famous है actually in the modern world. It's by this book and by the name of Ikigai. So I thought let me just share a fundamental insight from that book because I kind of loved the insight so much. So basically the premise of it is कि मतलब वो book पूरी is based on this research of old people in Japan because they usually have a very long life and like लोग आते हैं उनके पास पूछते हैं भाई सीन पानी क्या है, इतना जीवित कैसे हो आप, जिंदगी में लोग 60 पे टपक रहे हैं, आप 100, कहीं 105 106 तक जी रहे हैं, क्या सीन है भावा लोग। तो आई थिंक फंडामेंटली व्हाट दे टॉक अबाउट इज दैट लाइक एक सेंस ऑफ पर्पस से ड्रिवन है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ रफली स्पीकिंग बिकॉज आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जब 18-24 की होती है उसके बाद आप बोलते हो ओ भावा बहुत कमा लिया, कितना और कमाएंगे, अब कुछ और करना है, एंड देन लाइक व्हाट हैपेंस, वी ट्राई टू एक्सपैंड आवर बाउंड्रीज धीरे 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 करके, कई बार शादी कर लिए, और लाइक मतलब हम बहुत अग्रेसिवली लेते सर्टन डिसीजंस व्हिच makes us fall into this loophole of just like then having regrets, let's say, like if those are not the right decisions. So I think it's very important that when we are young we kind of sort our purposes in life, or let's say just strive to aim to get a purpose, if that's like if like you're not very clear per se कि मतलब क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। So like there are just four fundamental things from that book which I would just like to share with you all. So the first thing is कि पूछते हैं साइंटिस्ट लोग या जो भी जाते हैं रिसर्चर लोग कि बाबा मतलब कैसे ढूंढे हम पर्पस अपना, ठीक है। तो वो लोग 4 फंडामेंटल्स देते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब हमें किस चीज़ से प्रेम है, व्हाट डू वी लव डूइंग, what are the things that we are good at, is this skill something that is needed in the world right now, and does this thing like makes money, ठीक है। So these are like 4 fundamental questions. अब जरूरी नहीं है कि like आप इतनी डेप्थ में सोचे, बट what I feel कि like जो सबसे पहली 2 चीजें हैं राइट, कि what do I love doing and what are the things I'm good at, that is something that you should definitely introspect, क्योंकि जो बाकी की 2 चीजें हैं like is it something that the world needs, find ways to capitalize it, I think everything, like everything about you, some place somewhere someone needs it. So question out of the line, I think in this day and age of internet, it's just that you have to refine your skills to such a level ki people would be kind of forced to just go through you per se, and like the aim is not to target the entire bloody world, 8 billion log. The aim is to just find 1000 true fans. It's by a very famous marketer by the name of Kelly something, where he says that मतलब जिंदगी में जरूरी नहीं हम बकचोद ढूंढते रहे करोड़ों में ऐसे ग्रोथ करते रहे, इट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि बस हजार हजार लौंडे या लौंडे आप ढूंढो अपनी तरह, and like those are like crazy fans of you, like they are buying every merch of you, they are buying every book that you put out, they are buying every course, every podcast, कुछ भी है राइट। एंड लेट्स से अगर आप एक इंसान को 100 या $200 का भी लगा रहे हो, सो लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक इट्स जस्ट $100 पर ईयर ऑफ प्रोडक्ट फॉर दोस 1000 ट्रू फैंस। So I think it's $1 lakh and it's more than a yearly hefty salary. So
I think finding 1000 people who are weird like you in a fucking planet of 8 billion people is not so hard, right? So the most important question is वहाँ बैठना है अपने साथ, जानना है क्या चीज़ें प्रेम देती हैं आपको, और लेट्स से किस तरह फैसिनेशन, ये नहीं कि मतलब फंसे रहे जिंदगी भर एंड जस्ट रुके हुए हो एक जगह कि यार वेट कर रहा हूँ मैं, कब आएगा मेरा पर्पस, पता नहीं है. यू आर अ ब्लडी एस्केपिस्ट हु इज जस्ट नॉट वांटिंग टू टेक एक्शन इन लाइफ. सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाबा जिस तरफ इंटरेस्ट है जाओ, एक दो स्टेप्स लो. फटती है कैमरा के सामने बोलने से, बोलो बाबा, ट्राई करो. अगर लेट्स से फटती है किसी और चीज करने में या डर लगता है बड़ा, प्लीज रिमेंबर दैट ये डर आपके माइंड से आ रहा है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है. देर आर 1000 करोड़ों लोग हैं, लाइक वो जो चीज कर रहे हैं वो भी इंसान ही है आपकी तरह. लाइक the fundamental argument that मैं नहीं कर सकता is coming out of your own fear, and your world is very limited in that sense, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है, कॉन्क्रीट डाटा नहीं है, आप एक छोटी सी जगह में है एंड छोटे से आसपास कुछ होंगे बकचोद. अब इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स जो चिढ़ते हैं, या दोस काइंड ऑफ थिंग. उन्होंने जंक भरा है आपके माइंड में. द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट योर जंक, इट्स देयर ब्लडी ट्रैश. ठीक है, just take steps towards what you love doing, and the important thing is what, like, just find good metrics around it, like specifically speaking, like what makes those things good in one sense, and like just strive to kind of aim for it. And उसके बाद I think तरीके मिल जाते हैं to kind of capitalize on it, because the world is kind of so broad. I am definitely sure someone, someplace, someone needs your service. So there are a lot of ways to capitalize it. It's just that we need to learn the art of capitalizing. So ये ही चीज़ है. अब बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो बाबा लोग. And just an update. So now I'm live on like mostly all podcasting platforms. So Spotify would be one. You can just check it by the name of debukidastak. अगर आपको लगता है बाबा वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसी फॉर्मेट की, like these videos would be imported in an audio format and video format on Spotify. You can listen to me there if you find the content worthwhile. And यार सब्सक्राइब करो बाबा लोग, बहुत मेहनत लगती है रोज की एक एक वीडियो डालने में, बट करेंगे. That's the fun part of it. That's the challenge. चाहे like whatever challenges come, whatever does not come, we'll strive to make your life valuable in a joyful way. So this is Debashish Pindra from debukidastak signing off. Just a couple of updates. So my website is live now. So you can go to www.debukidastak.com. There you'll find a lot of resources. I have my blog running there. I have my reading list for the years. If you have any suggestions, comments, I'll be happy to take that feedback in and improve, because I just want to build a community which is hell smart and just always living in the world of ideas and making things happen.